Hello viewers, I hope you are fine and healthy. Let's discuss MCQs related to English literature, the history of English literature from Chaucer to Milton. So let's get started. Who was the first to use blank verse? वो कौन था जिसने पहले ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: थॉमस वेट, हेनरी ऑल ऑफ सरे, सर थॉमस मोर, नन ऑफ अबव। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, हेनरी अर्ल ऑफ सरे। सर थॉमस मोर यूटोपिया वॉज ओरिजिनली रिटन इन। सर थॉमस मोर की जो यूटोपिया है वो ओरिजिनली कौन से ज़ुबान में लिखी गई थी? रोमन, लैटिन, इंग्लिश, स्पेनिश। तो वो लिखी गई थी लैटिन में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। Pinpoint the main historical event of the 14th century. 14th century के तारीख़ी वाक़यात कौन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ब्लैक डेथ, 100 Years War with France, Recent World, All of Above। तो ये है All of Above, ये सारे हैं। Chaucer's age was marked with। चॉसर का जो एज है वो किस चीज़ के साथ मार्किंग करता है? उसमें क्या क्या शामिल है? करप्शन इन द चर्च, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, राइज ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस, ऑल ऑफ अबव। तो ये है ऑल ऑफ अबव, ये सारे हैं। पिन पॉइंट आउट द नोटेबल कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर। चॉसर का कंटेम्प्रेरी कौन था? गावर, वाइक्लिफ, लैंगलैंड, ऑल ऑफ अबव, ये सारे थे। ये जो 6 नंबर है ये आपके लिए छोड़ देते हैं। What is meant by this remark that Chaucer stands in much the same relation to the life of his times as Pope does to the earlier phases of the 18th century and Tennyson to the Victorian era? Options are: Chaucer reflects corruption in system. Chaucer believes in the high principles of religion. There is great variety of characters. Chaucer reflects spirit of time. So you think about it and mention it in the comments below. 7 number. Lowland movement aims at reforming. Lowland movement जो है उसका मकसद क्या है कि वो रिफॉर्म करे? किस चीज़ को? फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म, क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स चर्च। द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिश्चियनिटी। द ब्लैक डेथ दैट ravaged England during 1348 to 49 was। जो ब्लैक डेथ आई थी, जो बीमारी है इंग्लैंड में 1348 से लेकर 49 तक, तो वो जो है ना वो कौन सी बीमारी थी? इन्फ्लुएंजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर है प्लेग, बी। चॉसर्स वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू। चॉसर का जो काम है वो हम तकसीम कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, बी फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, सी स्पेनिश, लैटिन, इंग्लिश, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश। चॉसर स्टार्टेड इट्स लिटरेरी करियर अंडर डैश। तो क्या है? स्पेनिश, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश। तो वो है फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। One is not the feature of the poetry of Chaucer। इनमें कौन सी खुसूसियत चासर की शायरी की नहीं है? Music and imagery, love of nature, humor and realism, sarcasm। So the correct one is sarcasm। Sarcasm ये जो है ना ये चासर की पोइट्री की खुसूसियत नहीं है। How many pilgrims were along Chaucer in the prologue to Canterbury Tales। जो कैंटरबरी टेल्स थी उसमें चॉसर के साथ कितने लोग थे?
कितने पिलग्रिम्स थे? तो हमारे पास ऑप्शंस है 29, 30, 31, 36. So the correct answer is 29. In the prologue, the poet was lying in dash. इस प्रोलॉग में जो पोइट था वो कहाँ पर था? ये ऑप्शंस है tabard inn, tabard tavern, in poor hostelry, none of above. तो इसमें करेक्ट है tabard inn. वो tabard inn में वो वहाँ पर थे. What was suggested by the poet to tell 2 stories on the way and how many on the way back? तो पोइट जो है उसने क्या सजेस्ट किया था, क्या मशवरा दिया था कि कितनी स्टोरीज होनी चाहिए, कि एक बंदा जो है वो कितनी कहानियाँ बयान करेगा. सो देयर आर ऑप्शंस 1, 2, 3, 4. तो शायर ने क्या सजेस्ट किया था कि जो है ना कितनी स्टोरीज एक बंदा जो है वो नरेट करेगा. So what was suggested by the poet to tell 2 stories on the way? तो एक दो जो है ना वो जाते समय और कितनी आते समय बैक वापसी पर कितने स्टोरीज बयान करेगा, तो वो है 2. What are traces of realism in Chaucer? Chaucer में रियलिज्म के क्या ट्रेसेस हैं? तो ऑप्शंस हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, portrayal of realistic character sketches, both A and B, none of above. तो इसमें करेक्ट वन है C, both A and B, ये दोनों हैं. What are attributes that declare Chaucer as father of English novel? वो कौन सी खुसूसियात है जिनकी बिना पर चासर को फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है? So options are realism, dramatic art, his narrative techniques, all of above. तो ये जो ठीक है वो है all of above, ये सारे हैं. Pinpoint the marks of medieval chivalry. तो medieval chivalry जो है उसके पेन पॉइंट जो है ना, उसके जो मार्क्स है वो हमने पेन पॉइंट करने हैं. तो वो कौन से हैं, क्या क्या होता था? woman worship, to fight for honor, to fight for religion and country, all of above. तो ये सारे थे. The romance of Rose is, ये जो है ना romance of Rose ये क्या है? Original attempt by Chaucer, translation of Spanish work, English romances were compiled in English, none of above. तो इनमें एक भी नहीं है. The House of Fame, the Parliament of Fowls, Entrailis and Crusade, Speak, Roman influence, French influence on Chaucer, Italian influence on Chaucer, none of above. तो इसमें ठीक है French influence on Chaucer. The Legend of Good Women is remarkable poem shows Chaucer's mastery over. ये जो Legend of Good Women ये जो poem है Chaucer का remarkable poem है, तो ये क्या जाहिर करता है कि चासर की किस चीज़ पर महारत थी? Heroic couplet, irregular rhymes, mock epic, epic style. The correct one is heroic couplet. What is true about Chaucer's art of description? Chaucer का जो art of description है, बयान करने का जो art है, जो हुनर है, उसमें क्या हकीकत है? The characters were individuals as well as types. The characters were simple, complex, and heterogeneous. And portrayals were distorted and highly complex. None of above. इसमें ठीक है. The characters were individuals as well as types. Chaucer's Knight and Young Square Speak. तो options हैं chivalry, courtesy, dignity, honor. So the correct one is chivalry. The ecclesiastical characters are represented by monk, prioress, parson, all of above. ये सारे हैं. One of the individual mark of the wife of Bath is, उसकी क्या खुसूसियत थी wife of Bath की? Gap tooth,
large at hip, large hand curching, both A and B, A और B ठीक हैं. The War of Roses was, War of Roses जो था वो क्या था? A civil war, war against French, Italian war, none of above. तो इसमें ठीक है a civil war, वो एक civil war था. English and Scottish Chaucerians means, English और Scottish Chaucerian का मतलब है who love Chaucer, who follow Chaucer in style, who believe Chaucer's greatness, none of above. तो इसमें ठीक है who follow Chaucer in style, जो Chaucer को स्टाइल अंदाज में फॉलो करते, उसकी पैरवी करते हैं. The mystery plays based upon subjects taken from Lives of Saints, Bible, Old Testament, New Testament. ये जो मिस्ट्री प्लेस है ये किस चीज़ पर बेस्ड करती हैं, इसके टॉपिक्स कहाँ से ली गई हैं? तो वो बाइबल से लिए गए हैं. The miracles dealing with the lives of, ये जो मेरिकल प्लेस होती हैं ये किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, किन की ज़िंदगियों के साथ? सेंट्स, पॉप, मॉन्क्स, नन ऑफ अबव. तो करेक्ट ऑप्शन है सेंट्स, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं. Pageants were originally platforms on which plays were staged, decorated processions, both A and B, none of the above. तो इसमें एक भी नहीं है. These plays were didactic and religious in nature. तो कौन से plays है जो didactic और religious थे, मजहबी plays थे? Moralities, mystery, pageants, none of above. तो है moralities. Interludes have no other purpose but to amuse, to attract towards religion, both A and B, none of above. तो correct है amuse. Interlude जो है वो एक short शो सा होता है, दरमियान में लगाते हैं amuse के लिए, amusing के लिए, entertainment के लिए. One of the causes of Reformation movement was, Reformation movement के वजूहात क्या थे? King's quarrel with the Pope, Martin Luther and his teachings, and the third option is corruption of church, and the fourth one all of above. तो ये सारे हैं all of above. Who introduced sonnet into English poetry? English poetry में, शायरी में sonnet को किसने introduce किया था? Options है Thomas Waite, Surrey, Chaucer, Langland. तो correct one है Surrey. Totals miscellany. Totals miscellany is the, ये totals miscellany क्या है? Is the book of verses, first printed anthology of English lyrics, book by Surrey and Waite, all of above. तो ये है book by Surrey and Waite. Factors responsible for Renaissance are humanism, invention of printing, both A and B, none of above. वो factors जो Renaissance के ज़िम्मेदार हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है both A and B, humanism और invention of printing. On the morning of Christ's nativity, El Penseroso and Combus have been written by, ये किसने लिखे हैं? Spencer, Milton, Langland, none of above. तो ये लिखे हैं स्पेंसर ने. Tick the one best known sonnets of Milton. Milton की जो बेस्ट मशहूर sonnets हैं वो कौन से हैं? On his blindness, on the late massacre in Piedmont, the mistress, both A and B. तो ये है A और B दोनों. Mark the chief defeat of Milton's poetry. तो वो कौन सी है? उसमें क्या मसला है? मिल्टन की शायरी में frequent use of mythology, lack sense of human, lack of seriousness, all of above. तो ये है lack sense of human. Who said that Milton was of the devil of the party without knowing it? तो किसने ये अल्फाज कहे थे? तो है ऑप्शन से हमारे पास हीट्स, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ अबव. तो ठीक है ब्लैक.
To justify the ways of God to man was chief aim of writing. तो ये जो justifying ways of God to man, ये जो है ना चीफ मकसद था किस किस्म राइटिंग का, कौन सा जो राइटिंग था उसका मकसद ये था. Lycidas, Totals Miscellany, Paradise Lost, none of above. तो ठीक है, Paradise Lost ये उसका मकसद था, to justify ways of God to man. Coleridge once said, Coleridge ने एक दफ़ा कहा था, Milton is in every line of Paradise Lost. Milton जो है Paradise Lost के हर लाइन में है. What does this mean? इसका क्या मतलब है? Milton is an enthusiastic poet. Milton is Puritan. The poem is autobiographical. All of above. तो इसमें ठीक है, the poem is autobiographical. Autobiographical touches है. The second speech of Satan in the Paradise Lost is addressed to. ये जो Satan, शैतान का जो दूसरा स्पीच था, बयान था Paradise Lost में, वो किसको किया गया था? Fallen angels को, बेल्ज़ेबब को, to Almighty, none of above. तो वो बेल्ज़ेबब को किया गया था. For Paradise Lost, Milton chose. Paradise Lost के लिए Milton ने किस तरीके का इंतखाब किया? Heroic couplet, blank verse, sonnet, none of above. तो ठीक है, blank verse. Milton says has been called. Milton style has been called. Milton का जो style है उसको कहा जाता है? Affected style, mellifluous style, grand style, none of above. तो ठीक है, grand style. In Milton's poetry, there is frequent use of Roman words, French words, Latin words, none of above. Milton की शायरी में कौन से अल्फाज frequently use होते हैं? Latin words. One of the features of Milton's blank verse is ये जो Milton का जो blank verse है उसकी एक खुसूसियत ये है, कौन सी है? Overflow of sense from line to line, command over language, highly musical, all of above. तो ये सारे हैं. A nice fusion of Renaissance and Reformation is located in the poetry of Chaucer, Langland, Milton, Henry Vaughan. तो इसमें जो है ना ठीक वन है Milton. ये जो अच्छी तरीके से फ्यूजन की गई है, फ्यूजन ऑफ रेनेसांस की और रिफॉर्मेशन की, ये कहाँ किसकी शायरी में है? मिल्टन के शायरी में. Paradise Regained is completely dominated by. Paradise Regained जो है वो मुकम्मल तौर पर उस पर किस चीज़ का जो है ना कब्ज़ा है, डोमिनेटेड है, ऊपर है वो. तो इसमें क्या है? ह्यूमनिज़म है. तो देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से? ह्यूमनिज़म, प्योरिटनिज़म, सैटनिज़म, रेनेसांस. तो उसमें ठीक, इसमें ठीक ऑप्शन है प्योरिटनिज़म. Milton's Lycidas by theme is. तो इसका थीम क्या है? ये जो मिल्टन ने Lycidas लिखा है, ऑप्शंस है elegy, ode, sonnet, farce. The correct one is elegy, जो किसी के गम में लिखी जाती है. किसी के कोने में हम किसी को खोते हैं या जो किसी के गम में लिखी जाती है उसको elegy कहते हैं. Mark the period known as Age of Milton. एज ऑफ मिल्टन जो है वो कौन सी पीरियड है? 1603 to 1660, B 1603 to 1670, 1605 to 1665, none of above. तो इनमें एक भी नहीं है. So this was all about the MCQs related to the history of English literature from Chaucer to Milton. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.